Hello students, I welcome everyone to a new topic, very essential topic and very, this topic has some requirement of learning it in the present scenario. वर्तमान समय रे ही एयर पोल्यूशन ये जो टॉपिक रही एटा वर्तमान पढ़िबा निहाती भाव में जरूरी और rather we should be aware of not making the air polluted. वायु प्रदूषण को केमिति रोका जाई पारिबो से बाबद रे सचेतन हबाटा बरम अधिक जरूरी. So let's go to the lead-in part. Has it ever happened to you that when you come back home from outside, you have a running nose or you keep on coughing? Have raindrops ever tasted sour? When you are on public roads, you inhale a lot of polluted air and you feel uneasy. Many factors contribute to this air getting polluted. Air pollution is a hidden menace and poses the greatest threat to mankind in the future. Let us read the following piece and think of ways in which we can ensure that we breathe clean and pure air. तो कौन रही पिले यार अर्थटी जे कौन एमती केबे तुम सहित घटी जे जितेबाला तुम घर को बाहर को जाइल आउ बाहर घर को जितेबाला फेरीच से तुम नाकरू लगातार पानी बहिबा बा लगातार काश हवाटा चालू रही एवं केबे कौन तुमको वर्षा पानी टिके सावर बा खटालिया लगी कि तो जितेबाला कौन थाए ना आम जितेबाला पब्लिक रोड रे जितेबाला थाउ सर्वसाधारण रोड रे आम जितेबाला जीवा आसिबा करू यू इनहेल अ लॉट ऑफ पोल्यूटेड एयर एंड यू फील अनइजी सेतेबाला बहु मात्रा रे प्रदूषित वायु आम श्वास प्रश्वास माध्यम रे सेवन करू. एयर पोल्यूशन इज अ हिडन menace and poses the greatest threat to mankind in the future. तेणु एयर पोल्यूशन बा वायु प्रदूषण होउची सबुठारु बड़ लुक्कायित हिडन हिडन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हाइड. तेणु ये होउची सबुठारु बड़ लुक्कायित विपद एंड पोजेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड इन द फ्यूचर. एवं मनुष्य समाज पाई भविष्य रे यह सबुठारु बड़ विपदर समय सृष्टि करने को जाउची. तेणु बर्तमान यही पाराग्राफटी को आम जो फॉलोइंग जो विषयटी को बर्तमान आम पढ़ा एवं आम किभली भाव में चेष्टा करिबा आम केमिति एनश्योर हो पारिबा एमिति गोटे सुनिश्चित समय केमिति निज पय आनी पारिबा जेतेबेले आम शुद्ध वायु सेवन करि पारिबा. ओके, सो नाउ द टेक्स्ट पार्ट. No one can forget one of the most tragic industrial accidents that occurred at Bhopal on 3 December 1984. Deadly gas from a chemical plant operated by Union Carbide escaped into the atmosphere, killing over 4,000 local residents and rendering blind and crippling a large sections of city's surviving population. Not only Bhopal, but now every city, every town, every corner of the earth is facing such a crucial problem. Every day, every moment we breathe polluted air and may become a victim of air pollution. तो पहले वर्तमान कहगला जे 1984 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख रे भोपाल रे घटी सबुठारु जो दुर्घटनाटी घटी जहाँकि शिल्पजनित दुर्घटना थिला ताहाकु केही मध्य भूली पारिबे नाही. यूनियन कार्बाइड द्वारा परिचालित गोटे रासायनिक कारखाना बा प्लांट रु मारात्मक गैस वायुमंडल रे मिसिबाकु लागिला बा कौनसी प्रकार असावधानता जोगु एही गैस लीक होबाकु लागिला बा वायुमंडल रे प्रवेश कला जहा फल रे कि 4000 लोकल रेसिडेंट्स 4000 स्थानीय अधिवासी को यह मृत्यु मुखरे पकाइला एवं रेंडरिंग ब्लाइंड एंड क्रिपलिंग अ लार्ज सेक्शंस ऑफ सिटी सर्वाइविंग पॉपुलेशन एवं बंची जाइथिबा आउ समस्त बा बंची जाइथिबा अधिकांश स्थानीय बासिंदा अंध तथा अकर्मण्य हो गले बा शारीरिक स्तर रे बहुमात्रा रे प्रभावित हेले.
नॉट ओनली भोपाल बट नाउ एव्री सिटी। तेणु बर्तमान केवल भोपाल नुहे प्रत्येक सहर प्रत्येक नगर पृथ्वीर कोण अनुकोण जो क्रुशियल प्रोब्लेम जो वायु प्रदूषण नामक जो गुरुतर समस्या वर्तमान मुंड टेकी। प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रे आमे पॉल्यूटेड एयर बा प्रदूषित वायु को ही सेवन करुचे एंड मे बिकम अ विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन। एवं हुए तो आमे दिने एही वायु प्रदूषण रो गुरुतर शिकार हेई पारू। A man can live without food for a month, without water for the 2 or 3 days, but he cannot live without breathing even for a minute. It is estimated that an average adult exchanges 15 kg of air a day in comparison to about 1.5 kg of food consumed and 2.5 kg of water intake. It is obvious that the quantum of pollutants that enter our body through respirations would be manifold in comparison to those taken through polluted water or contaminated food. तो पिले माने एठी हमें जो प्रथमे गोटे वर्ड टी देखिले जे क्रिप्लिंग बा डैमेजिंग। तो क्रिप्लिंग मीन्स डैमेजिंग नष्ट करिबा। सो जणे लोक खाद्य बिना मासे काल पर्यंत रही परिबो, पानी बिना मध्य 2-3 दिन बंची पारिबो, किंतु गोटे मिनिट पाई मध्य निश्वास प्रश्वास नने ओके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बाहर को निर्गत हेउथुबा श्वास को कहंती निश्वास आ प्रवेश करुथुबा श्वास को कहंती प्रश्वास। तेणु निश्वास प्रश्वास नने किंतु गोटे मिनिट मध्य रही पारिबो नाही। सो इट सीम्स दैट breathing or air is much more important than for us in comparison to this food and water. एवं यह गोटे हिसाब करी देखा जाइछि जे जने प्राप्त वयस्क प्रत्येक दिन 15 केजी वायु सेवन करी थाए। केमिति आ जो 15 केजी तुलन में आम खाद्य से ग्रहण करी थाए 1.5 केजी एवं 2.5 केजी ऑफ वाटर इनटेक। खाद्य देह मध्य को 2.5 केजी पानी 2.5 केजी ऑफ वाटर एंड 1.5 केजी ऑफ फूड खाद्य ग्रहण करी थाए, किंतु 15 केजी ऑफ एयर आम एक्सचेंज करूँ बा श्वास प्रश्वास माध्यम आम 15 केजी वायु शरीर मध्य को नेउ। तेणु एथरू जना पड़ुछि जे द क्वांटम ऑफ पोल्यूटेंट्स बा जो परिमाण इट्स क्वांटम ओके। सो परिमाण अमाउंट So the quantum of pollutants that enter our body through respiration would be manifold in comparison to those taken in through polluted water or contaminated food. तेणु एथुर स्पष्ट भावे जना पड़ुछि जे 15 केजी वायु तुलन में 1.5 केजी रो खाद्य आउ 2.5 केजी रो water. So everything is getting polluted in this 21st century. So what he says, it is obvious that the quantum of pollutants that enter our body through respiration, श्वास प्रश्वास माध्यम आम शरीर को जेतिकी पोल्यूटेंट बा प्रदूषक प्रवेश करुची that would be manifold, ताहा विविध प्रकार से जो manifold देखो आउ गोटे एटी वर्ड आसिला manifold, that is various kind of okay. So manifold जार माने होची of many different kinds or many and various आको मत लिखि परिबा many and various अनेक एवं विविध प्रकार। तेणु वर्तमान कह गला जे तेणु जने वयस्क लोक हिसाब करा जाइछि जे केतिकी खाद्य केतिकी जल आउ केतिकी वायु से सेवन करे। तेणु प्रदूषित खाद्य दूषित जल तुलन आम शरीर भीतर को बहु गुणा अधिक दूषित वायु जोगु प्रदूषक प्रवेश करुअछि। नेक्स्ट,
Air is a mixture of gases comprising 78% nitrogen, 21% oxygen, and a little less than 1% argon, together with 0.03% carbon dioxide. These elements make up 99.9% of dry air. As long as this composition is maintained, the air is pure. If this composition is altered, that is, the oxygen level gets reduced or irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted, and inhalation of this polluted air can lead to respiratory disorders. बर्तमान ए पैराग्राफ रे प्रतिटी सेंटेंस रो अर्थ कौन रही देखा से कहूँ वायु हूँ एक सम्मिश्रण कहार ना जदि 100% एयर को जदि हिसाब करा जाए से 78% हूँ नाइट्रोजेन बा जबक्षारजान, 21% हूँ ऑक्सीजन बा अम्लजान एवं 1% रु किछि मात्रा रे कम मात्रा रे आर्गन थाए एवं 0.03% से कार्बन डाइऑक्साइड थाए एवं यही भाव में यही सबू गैस गुड़िक मिसिकी गोटे ड्राए एयर बा शुष्क वायुर 99.9% गठित करती। तेणु दीज एलिमेंट्स मेकअप 99.9% ऑफ द ड्राई एयर। आउ जे पर्यंत ये जो कंपोजिशन बा ये जो गठन बा ये जो अनुपात एटा एतिकी एटा एतिकी एटा एतिकी ए कंपोजिशन बा ये समाहार जे पर्यंत मेंटेन होगी थाए बा संतुलित होगी थाए से पर्यंत आमे वायुटा को प्योर बोली कहीपर अनपोल्यूटेड बोली कहीपर। थरे जदि यही कंपोजिशन बिगिड़ी जाए अल्प अधिक हो जाए बा कहबाकू गले जदि ऑक्सीजन लेवलटा कमिबा को लागिला बा इरिटेटिंग गैसेस जदि वायुमंडल को इरिटेट करिया माने जन को विरक्त करेबा बा चिड़ेबा तो एठी इरिटेटिंग गैसेस कौन पिले देख ये गोटे वर्ड अच्छे ना इरिटेटिंग। इरिटेटिंग मीन्स क्रिएटिंग impatience, creating impatience or slight anger in a person, or slight anger in a person। गोटे लोक भितर अधैर्य सृष्टि करिबा बा ताकू ता भितर राग सृष्टि करिबा एटा होची इरिटेटिंग। तेणु ऑक्सीजन लेवल जदि कमिबा पाई लागे बा ये जो इरिटेटिंग गैस गुड़ाक जदि एटमॉस्फेयर को प्रवेश करती ताले सही समय रे वायु को प्रदूषित बोली मने करू बा विवेचना करा जाए एवं एक पॉल्यूटेड गैस एवं एक पॉल्यूटेड एयर ये प्रदूषित वायु ग्रहण करने द्वारा आमको विभिन्न प्रकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बा श्वासक्रिया जनित रोग रे आमे आक्रांत हेउ। आवर एयर इज बीइंग पॉइजन्ड with the byproducts of an expanding technological society. Air pollution is nothing new, but what is the new is the scope and the severity of air pollution. Okay, so पिले माने एठी गोटे वर्ड देखिबा byproducts। Okay, byproducts means substance produced during manufacture of something else। So students कुआ गला जे वायुमंडल दिन को दिन विषाक्त होउची by the byproducts, with the byproducts means substance produced during manufacture of something else। आमे गोटे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा जाए किंतु बेले बेले अनिच्छा सत्वे किछि प्रोडक्ट जमिति कि आमे जदि गोटे कैंडलटा भी जदि लगाउचे सेतरु किछि मात्रा रे घरे भी किछि अळंधु हो जाए। तेणु अळंधु आमे चाहुने घरटा अळंधु हो किंतु एटा होची तार बाय प्रोडक्ट। जेतेबेले कैंडलटा जळे सेतेबेले निहाती मात्रा रे किछि धुआं कला धुआं सेतरु बाहरे जोटा कि घर को अळंधु जोटी माने घरे अळंधु सृष्टि करे। तेणु दिस इज द बाय प्रोडक्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ समथिंग एल्स। तेणु ये जो एवर ऑफ एन एक्सपांडिंग टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी
दिनकू दिन ये जो ज्ञान कौशलपूर्ण जो सभ्यतार आम रोचे जो सोसाइटी रोचे जो विभिन्न ज्ञान कौशल को व्यवहार करी दिनकू दिन परीक्षा निरीक्षा चली विभिन्न प्रकार वस्तु विभिन्न प्रकार प्रोडक्शन चली फल जो उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट गुड़ाक जेनेरेट होची ताहा द्वारा आम वायुमंडल दिनकू दिन प्रदूषित होगाकू लगी। तेणु वायु प्रदूषण कौन सी नुआ कथा नुहे तेरे नुआ कथा हेउची द स्कोप एंड सेवेरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन जो क्षेत्र बा जो जगह बा जो परिसर रे वायु प्रदूषण होबाकू लागुची एवं तार सेवेरिटी बा सीरियसनेस देखो ये जो वर्डटा है सेवेरिटी और दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस यार भयंकरता यार क्षेत्र जो क्षेत्र रे वायु प्रदूषण वृद्धि पाउची एवं यार भयंकरता बा सीरियसनेस होउची आम पई चिंतार विषय। ता परवर्ती पैराग्राफ देखिबा इन रिसेंट टाइम्स क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी सीन इन अर्बन एरियाज as well as in rural pockets. Most of these industries spew dense smoke from their chimneys. What is this smoke made of and how is it produced? Industries require steam and to produce it various fuels such as coal, coke, furnace oil are burned. So during burning along with heat smoke is also produced. Where does this smoke go? Apparently it disappears in a short time but in reality it never does so. Instead, it mingles with the atmospheric air and pollutes it. We respire this polluted air containing obnoxious gases, ash and dust particles. Without our knowledge, our lungs slowly become the garbage dumps for these pollutants. तेणु कौन कहगला पे देख जे इन रिसेंट टाइम्स जदि आमे निकट अतीतर जदि देखिबा बहु संख्यार शिल्पानुष्ठान देखा देइछि सहरांचल एवं ग्रामांचल मध्य रूरल पॉकेट्स ये गोटे देख वर्ड आछि पॉकेट्स। सो पॉकेट मीन्स अ स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप और एरिया। हियर पॉकेट्स मीन्स a small isolated group or area ओके एवं यही सब जो इंडस्ट्री बा यही जो सब शिल्प केन्द्र गुड़िक रही दे स्पीउ स्पीउ मीन्स थ्रो आउट ओके स्पीउ निर्गत करती बा छाड़ती। तेणु यही सब शिल्प केन्द्र गुड़िक कौन करती ना डेन्स स्मोक से चिमनी रू जो पटे धुआं बाहर व्यवस्था थाए से चिमनी रू बहल धुआं बा प्रबल मात्रा रे से माने धुआं वायुमंडल को छाड़ती। तेबे ए धुआं कौथिरे तैयारी आउ ये धुआं किभली भाबरे प्रस्तुत हुए तेबे पिले Industries require steam and to produce it various fuels such as coal, coke, furnace oil are burnt. तेणु शिल्प केन्द्र गुड़िकर कौन हुए बाष्पीय शक्ति बा बाष्प उत्पन्न करने दरकार सबू मेसिनरीज को गतिशील करने आउ आमर कौन कौन फ्यूल्स रहा लाइक कोल कोक एंड फर्नेस ऑयल ओके यही गुड़िक सबू से जला जाए एवं यही जलिबा प्रोसेस रे ड्यूरिंग बर्निंग एलॉन्ग विथ हीट स्मोक इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तेणु ये समय तापज शक्ति सहित किछि मात्रा रे स्मोक बा धुआं मध्य सेथुरु निर्गत हुए। तो ये धुआं व्हेयर डज दिस स्मोक गो प्रश्न उठुची वर्तमान ये जो धुआं अवांछित भाव में सृष्टि हुए ये धुआं सब कुआड़े जाए ओके। तेणु एपरेंटली इट डिसअपियर्स इन अ शॉर्ट टाइम। तेणु यह अति सहजरे जना पड़े देखा जाए जे ए धुआंटा कौन हुए बहुत कम समय भितर यहाँ मिले जाए प्रकृत में यह कौटी गायब हो जाएनि यह कौन करे ना वायुमंडल सहित द्रवीभूत हो जाए वायुमंडल रे बा एयर रे संपूर्ण भाव में मिसी जाए एवं यह को प्रदूषित करे।
we respire this polluted air containing obnoxious gases बा ये जो unpleasant गैस गुड़ाक रोचे यही गैस गुड़ाक आम से पल्यूटेड एयर ग्रहण करुचे माने यही सब पल्यूटेंट गुड़ाक भी आम ग्रहण करुचे लाइक obnoxious gases ash बा पाउंश एवं डस्ट पार्टिकल धूलिकणा इत्यादि एवं विदाउट आवर नॉलेज आवर लंग्स स्लोली बिकम गार्बेज डम्प्स फॉर दिस पोल्यूटेंट्स एवं खत गदा बा गोटे अलिया गदारे जमती आम अलिया फिंगू ठीक सेमिति यही प्रदूषक गुड़ाक आसिक आमर छाती भितर लंग्स रे ये सब आसिक जमा हुए। नेक्स्ट paragraph देखिबा thermal power stations are rated the first among the industries that discharge high amounts of smoke and ash. Other significant industries contributing to air pollution are cement, steel and ore processing industries. Some of the chemical industries also release toxic fumes into the air along with smoke. तेणु पे वायुमंडल भीतर को अधिक परिमाण रे धुआं आउ पाउंस निर्गत करिबारे सहायक हेउथिबा शिल्प केन्द्र गुड़िक मध्य आमर तापस विद्युत केन्द्र गुड़िक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथांती। तेणु वायु प्रदूषण रे सहायता करुथुबा अन्य केतेक गुरुत्वपूर्ण शिल्पानुष्ठान मध्य सीमेंट इस्पात एवं धातुपिंड बा ओर प्रोसेसिंग धातुपिंड प्रक्रियाकरण शिल्प प्रधान एवं some of the chemical industries also release toxic fumes into the air along with smoke एवं आहुरी बहुत गुड़िए रासायनिक संस्था अच्छी बा शिल्प अच्छी जो माने कौन करती ना टॉक्सिक बा पॉइजनियस बा विषाक्त बाष्प सहित धुआं मध्य वायुमंडल को निर्गत कराई थांती। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा पिले द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर नो वे less dangerous than the industrial smoke. It is reported that automobiles in Greater Kolkata alone spew about 1500 tons of pollutants into the atmosphere every day. It is stated that a person living in Kolkata, never whether he is a smoker or not, is forced to inhale toxic substances equivalent to smoking 2 packets of cigarettes a day. The levels of pollution in cities like Delhi, Mumbai and Chennai are equally alarming. To meet the demands of an exploding population, the number of buses plying on the roads is being increased. Equally, a greater number of lorries and other good carriers are on the move. Along with heavy vehicles, use of cars, jeeps, two-wheelers such as bikes, scooters, mopeds have increased dramatically, all contributing to significant levels of air pollution. Automobiles are responsible for 60% of air pollution in various parts of the world as they release maximum carbon monoxide into the atmosphere. The menace of air pollution attributed to the automobile exhaust has now reached the peak level and if this trend continues, we may have to wear nasal filters on our nose in future. ओके तो देख गोटे बड़ पाराग्राफटे आउ बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा यही पाराग्राफटी कहगला जे पोल्यूशन मात्रा कौ सहर में केमिति कौन रही कौ कौ जिनस गुड़ाक जो वायु प्रदूषण बढ़िबारे लगी। तेणु जानवाहन निर्गत गैस मध्य शिल्पजात धुआं ठारू किछि कम मारात्मक नुहे एवं मिलिथिबा तथ्य अनुसार ग्रेटर कोलकाता रे प्रत्येक दिन कौन हुए ना 1500 टन पोल्यूटेंट बा प्रदूषक वायुमंडल को छड़ा जाई थाए बा फिंगा जाई थाए कहले भूल हबो नहीं। एवं कोलकाता रे रहुथुबा जने लोक सिगरेट टाणु कि न टाणु सी जेतिकी परिमाणर पोल्यूटेंट निज शरीर मध्य को प्रश्वास माध्यम रे निए ता दी पैकेट सिगरेट टाणिले जेतिकी पोल्यूटेंट बा जेतिकी विषाक्त जिनिस शरीर मध्य को जानता केवल कोलकाता रे सेतिकी परिमाण रे किछि सिगरेट न पिकी मध्य सम परिमाणर विषाक्त द्रव्य गोटे लोक देह को जाए।
ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ସହର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲାର୍ମିଂ ବା ବିପଦ ସୂଚକ, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା ଆଲାର୍ମରୁ ଆଲାର୍ମିଂ, ଓକେ, ବିପଦ ସୂଚକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି। ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ିଂ ପପୁଲେସନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ିଂ ବା ଏଭର ଇନକ୍ରିଜିଂ ସଦାସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା, ସବୁବେଳେ ଫୁଲି ଚାଲିଥିବା, ସବୁବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା। Population, the number of buses plying on the roads, plying means running, ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ରୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଲରିଜ୍ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବାହକ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। Along with heavy vehicles, use of cars, jeeps and two-wheelers such as bikes, scooters and mopeds have increased dramatically. ତେଣୁ ସମାନ ପରିମାଣ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ବାଇକ୍ସ, ସ୍କୁଟର୍ସ, ମୋପେଡ୍ସ have increased dramatically, all contributing to significant level of air pollution. ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅର୍ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ ତା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଟ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଯାନବାହନରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏକ୍ସଜଷ୍ଟସ୍ or the amount of pollutants that are released into the atmosphere, it has increased dramatically and up to a significance level. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଏହି ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ାକ ବାୟୁରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷକ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 60% ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, 60% ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ ଯାନବାହନ ବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। 60% of air pollution in various parts of the world as they release maximum carbon monoxide into the atmosphere. So this carbon monoxide ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। The menace of air pollution attributed to the automobile exhaust has now reached the peak level. এই ଯେଉଁ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁ ରୁହେ, if we don't become successful or capable of controlling this air pollution, so if this trend continues the ways in order to meet the demands of this exploding population, number of vehicles, lorries, trucks, mopeds, cars, all kind of vehicles are increasing and they run on petrol or diesel. So they are releasing this carbon monoxide and other obnoxious gases. So that's why the air is getting hot and also polluted. So if this trend continues, a trend jodi ei bhali bhabare rahila, continuously we keep on releasing this obnoxious gases in the atmosphere, we may have to wear nasal filters on our nose in the future. गोटे शोधक बा फिल्टर जहाँ को कहती आम समस्त को जदि यही भाव में यही परंपरा जदि चालू रहा वायु को प्रदूषित करिवार, तेणु से समय खूब सन्निकट जितेबाला नाकरे आमको फिल्टर धारण करिवार परिस्थिति उत्पन्न हो पारे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा पिले, द डैमेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन इज एनॉर्मस. In money alone, it represents a loss of billions of dollars each year. Many flower and vegetable crops suffer ill effects from the car exhaust gases. Trees have been killed by the pollution from the power plants. Cattle have been poisoned by the fumes from the smelters,
and recover aluminium from ore. Air pollution causes rubber tires on automobiles to crack and become porous. Fine buildings become shabby, their walls blackened with soot that has settled on them. Building surfaces may actually deteriorate because of air pollution. तो पिले देख जे प्रदूषण जनित क्षति आमर व्यापक अटे एवं केवल आर्थिक दृष्टिकोण जदि विचार करिबा तेबे प्रदूषण जनित क्षति वर्षकु 100 कोटी डॉलर हेबो एवं many flower and vegetable crops suffer ill effects from the car exhaust gases. कार रो निर्गत हेउथबा विषाक्त बाष्प जोगु अनेक गुड़िए पनीपरिबा एवं फूल फल गछ मध्य क्षतिग्रस्त हुअन्ति एवं ए जो पावर प्लांट्स बा आमर जो विद्युत केन्द्र गुड़िकरू सृष्टि प्रदूषण जोगु अनेक वृक्ष ध्वंस हो जाइछन्ति. Cattle have been poisoned by the fumes from the smelters and recover aluminium from ore. एवं एठी मध्य आहुरी कोण कुहागला जे जो फर्नेस बा धातुपिंड तरलैबा जंत्ररू निर्गत धुआं एवं धातुपिंडरू प्रस्तुत आलुमिनियम जनित विषाक्त बाष्प द्वारा गाई गोरु बा कैटल मध्य प्रभावित होइछन्ति एवं जानवाहन रे व्यवहृत रबर टायर कोन हुए वायु प्रदूषण जोगु फाटी जाई सेथिरे छिद्र सबु देखा दिए. यह द्वारा सुंदर कोठा घर सबु सैबी SHABBY यह जोगु सुंदर कोठा घर सबु कौन हो पड़े कुश्चित हो पड़े. देख पे सैबी वेरी ओल्ड एंड वर्न आउट वेरी ओल्ड एंड वर्न आउट. ओके पुरातन एवं क्षयप्राप्त अवस्था वर्न आउट एवं यही वायु प्रदूषण जोगु सुंदर कोठा घर सबु मध्य सैबी पुराणा अति पुराणा बा कुश्चित देखा जाए एवं ये जो कांथ गुड़िक ऊपर कौन हुए धुआं जमिकी से गुड़िक कला पड़ जाए एवं वायु प्रदूषण जोगु कोठा घर कौन हुए ना सुंदर कोठा घर गुड़िक अति पुरातन एवं क्षयप्राप्त अवस्था भली देखा जाती एवं कांथ गुड़िक ऊपर धुआं जमिकी कला अळंधु सृष्टि करे सुट धुआं जमी कला अळंधु सृष्टि करे एवं वायु प्रदूषण जोगु कोठा घरर पृष्ठगुड़िक प्रकृत में क्षयप्राप्त हो पारे. जो कहला पिले कौन ना बिल्डिंग सरफेसेस में एक्चुअली डेटेरियोरेट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. यहाँ पर क्वेश्चन मध्य अच्छी हाउ एयर पोल्यूशन हैम्पर्स द बिल्डिंग्स एंड ऑल. तापर पैराग्राफ टी देखिबा पिले But the high cost of air pollution is most strikingly illustrated in its damaging effects on human body. Air pollution causes eye irritations, scratchy throats, and respiratory illness. It also contributes to a number of serious diseases. In both the United States and Europe, periods of a high level of air pollution were linked to an increased number of deaths. किंतु मानव शरीर उपरे वायु प्रदूषणर सबुठारु अधिक क्षयकारी प्रभाव विषय रे खूब भल भाव बुझे दिया जाइछि. कारण अलग जिनस सब क्षयग्रस्त हवा बा प्रदूषित हवा ठारू अधिक इट्स मोर हार्मफुल वी कंसीडर इफ वी गेट पोल्यूटेड और इफ वी फेस सम डिजीजेस. एवं वायु प्रदूषण जो कौन हुए आखिरे जंत्रणा हेबा चक्षु जंत्रणा हेबा थ्रोटिंग गला कुंडई हेबा एवं श्वासक्रिया संबंधी असुस्थता मध्य सृष्टि हुए. यह जोगु आहुरी मध्य अनेक सीरियस डिजीजेस बा गुरुतर रोग मध्य सृष्टि हुए. उभय यूनाइटेड स्टेट्स एवं यूरोप रे मध्य कौन देखा जाइछि ना मात्राधिक प्रदूषण काल रे ही अधिक परिमाण रे मृत्यु घटित होइथिला. तापर पैराग्राफ टी देखिबा मच डायरेक्ट हार्म इज डन बाय द एयर पोल्यूशन देन साइंटिस्ट्स आर alarmed because the amounts of gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide in our atmosphere are increasing. These gases tend to trap the radiation that reaches the earth from the sun, and as a consequence of which the atmosphere could become warmer. This process would eventually lead to
ग्लोबल वार्मिंग जागतिक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग कथा वर्तमान पीढ़ी कहगला। तेणु वायु प्रदूषण द्वारा अनेक प्रत्यक्ष क्षति मध्य घटी एवं वैज्ञानिक माने मध्य ए बाबद में चिंताग्रस्त बा आशंकाग्रस्त अच्छी जे आमर वायुमंडल रे कौन होची पिले अंगारकाम्ल मिथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड रो परिमाण धीरे धीरे बढ़िबारे लागिची एवं सूर्य ठारू पृथ्वी रे पहुँचुथिबा विकिरण रश्मि को यही सब गैस कौन करनी आब्जर्व करनी जहाँफल वायुमंडल खूब उष्म हो पारे एभली धारा परिशेष जागतिक उष्मता को जन्म देव ग्लोबल वार्मिंग ओके बिकॉज द सनलाइट विल बी अब्जॉर्ब बाय दिस टाइप ऑफ गैसेस। तेणु ये जिनसटी को कहगला जागतिक उष्मता बा ग्लोबल वार्मिंग। देन 12 नंबर पैराग्राफ टी देखिबा scientists have been concerned too about the widespread use of a substance that may destroy the atmospheric layer that protects us from the harmful kinds of solar energy. This substance belongs to a group of chemicals and chlorofluorocarbons. It is used as a refrigerant and a cleaner and was once widely used in spray cans. तेणु वैज्ञानिक माने वर्तमान गोटा जिनस को लेकिन बहु मात्रा रे चिंतित कौन ना वाइड स्प्रेड यूज बहुल व्यवहार करा जाउची गोटे पदार्थर जहाँकि आमर जो वायुमंडल बा जो परिवेशर जो स्तर रोची एटमोस्फेरिक लेयर जहाँकि आमको क्षतिकारक सूर्य रश्मि रक्षा करे यही सब्सटेंस कौन करुच्ची से एटमोस्फेरिक लेयर बा स्तर को क्षति पहुँचाई पारे एवं दिस सब्सटेंस बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स एवं यही वस्तु एक रासायनिक मानकर समष्टि एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन रो अंतर्भुक्त जो पदार्थटी एटमोस्फेरिक लेयर को डिस्ट्रॉय करुच्ची। इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटर रही रेफ्रिजरेंट यह एक शीतलीकरण ठंडा फ्रिज रे देखिबो रेफ्रिजरेटर रे ठंडा हुए तो यह गोटे शीतलीकरण द्रव्य रूपे व्यवहार करा जाए एंड अ क्लीनर हिसाब रे मध्य व्यवहार करा जाए एंड वंस वाज वाइडली यूज्ड इन स्प्रे कैन्स एवं एकदा यह स्प्रे कैन रे मध्य व्यवहार करा जाउथला। पिले देखो जो स्प्रे कैन्स अच्छी एटा एक्चुअली कौन से डिफिकल्ट वर्ड नुहे तथापि जो स्प्रे कैन्स कौन हो देख अ प्रेशराइज्ड कंटेनर फ्रॉम व्हिच a spray can is a small metal container containing liquid such as paint under pressure so that it can be sprayed। तो कौन हुए स्प्रे कैन रे विभिन्न प्रकार पृष्ठ को रंग करने से विभिन्न प्रकार पेंट बा रंग रखा जाए था। अ स्प्रे कैन इज अ स्मॉल मेटल कंटेनर गोटे छोट मेटल कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड सच एज पेंट अंडर प्रेशर ताहा चाप पाई बा एक माने चाप पाई कौन थाए से पेंट से थाए जहाँ फल कि सो दैट इट कैन बी स्प्रेड। तेणु स्प्रे कैन्स रे यही हार्मफुल काइंड ऑफ मटेरियल को व्यवहार करा जाउथिला। Another concern is acid rain. This is rain or other precipitation that contains oxides of sulfur and nitrogen। यहाँ पर गोटे क्वेश्चन भी अच्छी बोले एसिड रेन उपरे। So this is rain or other precipitation that contains oxides of sulfur and nitrogen along with other chemicals. Acid rain causes damage in lakes and rivers. It poisons the plants and animals that live in the water. It may also affect crops and other plants, stone buildings and monuments and drinking water। तेणु कौन कहगला पिले ना जे वायु प्रदूषण आउ गोटे चिंतार विषय होची एसिड माने अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण जो अम्ल वर्तमान वर्षा हबारे मध्य लागिलानी। प्रेसिपिटेशन देख द वर्ड इज प्रेसिपिटेशन ओके। सो प्रेसिपिटेशन रो एठी माने पिले रहिला फॉल ऑफ रेन स्नो और हेल तुषार झड़ हवा वर्षा हवा एगुड़ा को कह जाए फॉल ऑफ रेन और स्नो फॉल ऑफ वर्षण जहाँ कहते फॉल ऑफ रेन और स्नो।
that contains oxides of sulfur and nitrogen ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷା ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହ୍ରଦ ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇଟ୍ ପଏଜନ୍ସ ଏହା ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ ଏଥିରେ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଦର ଶସ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ରପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ପଥର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଡ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ସର୍ଭସ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଲାଇକ୍ ତାଜମହଲ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ମାରକ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଗୃହ ବା ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ସର୍ଭସ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏଇ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଶସ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ଘରଗୁଡ଼ିକ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଭିନ୍ ଏଇ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ତେଣୁ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହେବ ମାନେ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ବା ପିଇବା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାପର ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଦେଖିବା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ it falls on the water in rivers and lakes turns acidic for instance in Sweden 4,000 lakes have been so severely affected that no fish has survived it also changes the soil's nutrient content it washes or leaches away nutrients like potassium, calcium and magnesium from the upper layer that helps trees grow. Acid rain kills large stretches of forests leaving behind the leafless skeletons of trees. ତେଣୁ ଯାହା ଉପରେ ବି ପିଲେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ସେ ତାକୁ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଡିକ୍ ବା ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ସ୍ୱିଡେନରେ 4,000 ହ୍ରଦ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ନୁହଁ 4,000 ହ୍ରଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ମାଛ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିର ଯେଉଁ ପୋଷକ ସ୍ଥିତି ବା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ ବା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ଏହା ଗଛ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅପର ଲେୟରରୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ଧୋଇ ନିଏ ଏବଂ trees may not get these nutrients from the upper layer why because it leaches away ଦେଖ washes or leaches away ଗୋଟେ phrasal verb it leaches away that is washes away ଧୋଇ ନିଏ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କ'ଣ କରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମି ଉପରରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ନିଏ ଏବଂ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କିଲ୍ସ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚେସ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏପରିକି ଏ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ସ୍କେଲିଟନ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମଣିଷର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ବି ଦେଖିଥିବ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଦେଖିଥିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିକାରକ ଯେଉଁଠାରେ ଘଞ୍ଚ ବିସ୍ତୃତ ବନାନୀ ରହିଛି ସେ ବିସ୍ତୃତ ବନାନୀ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରହେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କିଲ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ it hampers living things even the monuments the walls the houses the stones everything next is when forests begin to die the animals and the birds in those forests follow among the growing list of species threatened by acid rain are the pied flycatcher and the Apollo butterfly in Sweden. The deeper fish has vanished from the river of Central Wales and the brown trout from the Norwegian lakes. The list goes on. ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରନ୍ତି ବା ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇକ୍ୟାଚର ଗୋଟିଏ ପାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇକ୍ୟାଚର ଏଇଠି ପିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇକ୍ୟାଚର ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଆକାରର ଜୀବ ଏବଂ ଆପୋଲୋ ବଟରଫ୍ଲାଏ ସ୍ୱିଡେନର ଆପୋଲୋ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଦେନ୍ ଡିପର ଫିଶ୍ ନାମକ ମାଛ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସର
नदीरू ये सब जीव गुड़िक विलुप्त होगापाई वर्तमान बसिछंती. So among the growing list of species threatened by acid rain are pied flycatcher and Apollo butterfly in Sweden. Sweden रे ये दुईटी जीव. The deeper fish has vanished from the river of Central Wales and the brown trout from the Norwegian lakes. नॉर्वे रो हेची नॉर्वेजियन, नॉर्वे रो अधिवासी बा नॉर्वे रो संबंधित कोनसी कथा को. ब्राउन ट्राउट जहाँकि एक बादामी रंगर माछ अटे. यही नॉर्वेजियन लेक्स बा नॉर्वेर नदी मानकरू एक बादामी रंगर ये जो माछ ये मध्य विलुप्त होगापाई बसीची. ओके, डीपर फिश मध्य भ्यानिश हो जाइए सेंट्रल वेल्स रु एवं ब्राउन ट्राउट नामक एक बादामी रंगर माछ मध्य नॉर्वेजियन लेक्स रु विलुप्त होगाकू लागिची. द लिस्ट गोज ऑन. ए तालिका बहुत लंबा. बहुत विरल प्रजातिर जीव रेयर स्पेसीज वर्तमान से माने दे आर सिंपली नो मोर ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ disturbances. What about our health? Acid rain irritates the sensitive tissues of our eyes and lungs, particularly in children. It also causes skin lesions. देखो ये आउ गोटे वर्ड आसिला पेले lesions. ओके, सो lesions माने हला wounds or injuries. क्षत, wounds or injuries. ओके, तेणु देख कौन कहगला. तेणु ड्यू टू एसिड रेन in all kind of disturbances are going on. The negative impact of acid rain on ourselves is also enormous. तेणु आम स्वास्थ्य उपरे अम्ल वर्षार प्रभाव मध्य कौन रोची से ही कथा जदि चिंता करिबा तेबे कौन हुए ना आम आखिर संवेदनशील टिश्यू गुड़ी को अम्ल वर्षा कौन करे क्षतिग्रस्त करि थाए बा जंत्रणा पहुँच थाए. खास करी पिला मानकर पर्टिकुलरली it irritates or the sensitive tissues of our eyes and lungs, particularly in children. मुख्यतः छोट पिला मानक क्षेत्र में देखा जाए से माने फुसफुस रे जंत्रणा एवं आखिरे जंत्रणा आखिर संवेदनशील टिश्यू गुड़ी करे जंत्रणा हेबा आरंभ होई थाए. It can also cause skin lesions. यह मध्य कौन करे ना चर्म रे क्षत बा विकृति सृष्टि करे, wounds or injuries. Living beings apart, even buildings are not spared. In Poland, the beautiful old buildings of Krakow are slowly being destroyed by acidic smog. In Athens, a city which is highly polluted, acid rain is eating into the marble of its world-famous monuments. Experts say that more damages has been done in the past 25 years than in the previous 2000. तेणु जीवंत वस्तु गुड़िक ह्यूमन एंड एनिमल्स एमान को छाड़ी देले even buildings living beings apart, even buildings are not spared. ए अम्ल वर्षा जोगु कौन होउछि पिले ना जो घर गुड़िक अच्छी बिल्डिंग गुड़ाक अच्छी सी मध्य छाड़ पाई नाहंती ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज द मेन कॉज. as the air is getting polluted, after that it tends to or it leads to the acid rain. पोलैंड रे कौन है ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ क्राको. पोलैंड रो क्राको सहर जो सुंदर आ पुराना कोठा घर सबू यही अम्ल मिश्रित कुहुड़ी धुआं जोगु क्षय प्राप्त हेबारे लागिछि बिले एसिडिक स्मॉग. देखो ये गोटे वर्ड कौन कहगला स्मॉग. ओके, ये स्मॉग ये गोटे संधि शब्द कौन ना अ मिक्सचर ऑफ स्मॉग प्लस फॉग. स्मोक धुआं प्लस फॉग. फॉग हूँ कौन ना आमर घन कुहुड़ी धुआं आ कुहुड़ी बा कुहुड़ी धुआं मिश्रित
कुहुड़ी सी कौन करे ना सृष्टि करे। तेणु पोलैंडर क्राको सहर में सुंदर एवं पुराणा कोठा घर सबू अम्ल मिश्रित कुहुड़ी धुआं जोगु क्षयप्राप्त होबारे लागिछि। एथेन्स भली सबुठारु प्रदूषित सहर में अम्ल वर्षा यार विश्व प्रसिद्ध स्मारकी गुड़िकर मार्बल को मध्य क्षय करिबारे लागिछि। एवं विशेषज्ञ मानक मतरे जे 2000 मसीहा पूर्ववर्ती काल रे जेतिकी परिमाणर वायु प्रदूषण हेई नथिला ताठारु बहु गुणा अधिक प्रदूषण हेइछि विगत 25 वर्ष मध्यरे। So there are three basic approaches to control air pollution. Preventive measures such as changing the raw materials used in industry or the ingredients of fuel. Dispersal measures such as raising the heights of smokestacks, and collection measures such as designing equipment to trap pollutants before they escape into the atmosphere. So देखो बोले कौन कौन कहला जे प्रिवेंटिव मेजर्स, डिस्पर्सल मेजर्स एंड कलेक्शन मेजर्स। तो ये जो डिस्पर्स शब्दर वर्ड होची गो और सेंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके तेणु तीनटा मेजर कौन कौन रहिला, तीनटा अप्रोच रहिला एयर पोल्यूशन को रोकिबा पाई। गोटे हला प्रिवेंटिव मेजर्स, यू नो द प्रोवर्ब सेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंटिव मेजर्स रे कौन रहउची ना फुएल रो जो उपादान अच्छी से उपादान गुड़ी को जदि अल्टर करा जाए बा परिवर्तन करा जाए जेमिति सही उपादान युक्त जाळेणी बा फुएल जाळिबा द्वारा बिल्कुल मध्य प्रदूषण हेबो नाही। डिस्पर्सल देखो डिस्पर्स वर्ड मान होची गो और सेंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग दिगरे जिबा बा छाड़ी देबा। ओके सो लोअर एटमोस्फियर रे आमे बास करूचे, जदि याकू हायर एटमोस्फियर लेवल रे ताकू पॉल्यूशन बा पॉल्यूटेड एयर को जदि छाड़ी दिया जीवो, रिलीज कर दिया जीवो, ताहाले मध्य आमे लोअर एटमोस्फियर रे आमे ता द्वारा क्षतिग्रस्त हेबा नाही। सो लाइक रेजिंग द हाइट्स ऑफ द स्मोक स्टैक्स एंड कलेक्शन मेजर्स बा समष्टिगत पद्धति कौन रहिला सच एज डिजाइनिंग इक्विपमेंट टू ट्रैप पॉल्यूटेंट्स बिफोर द एस्केप इनटू द एटमोस्फियर। एवं ये जो पॉल्यूटेड एयर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज, इवन आमर यू नो दिस ऑटोमोबाइल एग्जस्ट जो भी आमर पॉल्यूटेड एयर वायुमंडल को छड़ा जाउछि सेठी ताकू जदि फिल्टर आउट करि नबा, जदि ट्रैप करि नबा पॉल्यूटेंट गुड़ा को पॉल्यूटेड एयर रु जहाँ जहाँ पॉल्यूटेंट अच्छी ताकू जदि एब्जॉर्ब करि नबा, फिल्टर आउट करि नबा, ताहले यू नो नॉन पॉल्यूटेड एयर एटमोस्फियर को रिलीज होबो, जहाँ फल रे आउ एटमोस्फेरिक एयर पॉल्यूटेड हेबो नाही। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, nearly all the highly industrialized countries of the world have some type of legislation to prevent and control air pollution. One difficulty is that the pollutants may be carried by the wind from one country to another, often for distances of thousands of miles. The death of lakes in eastern Canada has been caused by acid rain that originated in the United States. Acids produced in Britain and France have caused damage in Sweden. तो legislation देखो legislation माने मुठ लिखी a body of laws बा जो आईन प्रणयन संस्था रही। तेणु कौन कहगला देख पृथ्वीर प्राय जिते गुड़े सब हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बा खूब शीघ्र जो माने शिल्प क्षेत्र में उन्नति करुछंती से सब देश गुड़िक वायु प्रदूषण को रोकवा और नियंत्रण करने केतेक लेजिस्लेशन बा बॉडी ऑफ लॉज रही। तेज गोटे समस्या होची जे प्रदूषक गुड़िक कौन करती ना गोटे देशरू अन्य देश को मध्य पवन द्वारा हजार हजार माइल पर्यंत परिवाहित हो पारती। The death of lake in eastern Canada has been caused by the acid rain. एवं युक्तराष्ट्र रे उत्पत्ति लाभ करिथिबा अम्ल वर्षा कौन करिछि ना पूर्व कनाडा रे that originated in United States. Okay, the death of lakes in eastern Canada has been caused by acid rain that originated in the United States. United States रे हेइथिबा acid rain द्वारा प्रभावित किए हेइछंती समस्त जते ह्रद रही ईस्टर्न कैनाडा रे ये माने प्रभावित होइछंती। सो हियर इज द प्रूफ
Acids produced in Britain and France have caused damage in Sweden. एवं एसिड produced in Britain और France रे जेतिकी अम्ल वर्षा हेची ताहा द्वारा कोन ना स्वीडन रे मध्य लोक माने क्षतिग्रस्त होइछंती. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा. There have been many initiatives in different countries for making laws, setting standards and norms to check air pollution and ensure quality air. Air quality programs have brought improvements in many areas. For example, burning low sulfur coal and oil in factories and power plants has lowered pollution in many cities. To meet standards, automobile engines have been redesigned and new cars have been equipped with devices as the catalytic converter, which changes pollutants into harmless substances. Because of these new devices, air pollution from car exhaust has also been reduced. तेणु देख जे अनेक अंचल रे हमर एयर क्वालिटी प्रोग्राम मध्य जे अनेक देश रे वायु प्रदूषण को रोकिबा पई अनेक प्रकार पदक्षेप निया जाउची. देयर हैव बीन मेनी इनिशिएटिव इन डिफरेंट कंट्रीज. जथा सेति पई आईन प्रणयन करा जाईची. वायु प्रदूषण रो केते मात्रा रे प्रदूषण हेले ताकू चिंताजनक वायु प्रदूषण से मान निर्धारण करा जाईची एवं नियमावली मध्य स्थिर करा जाईची एवं समस्त जेबली प्रदूषण मुक्त वायु पाई परिबे सेथि पई मध्य विभिन्न कार्यक्रम हाथ को निया जाउची एवं अनेक अंचल रे एयर क्वालिटी प्रोग्राम गुड़िक द्वारा प्रदूषण रे मध्य सुधार आसीची. किभली भाबरे ना उदाहरण स्वरूप अल्प सल्फर युक्त कोयला एवं तैल तापज विद्युत केन्द्र गुड़िक जालिबा द्वारा अनेक सहर रे वायु प्रदूषण ह्रास पाइछि. देख जो कथाटी कहला, फॉर एग्जांपल बर्निंग लो सल्फर कोल, लो सल्फर युक्त अल्प सल्फर युक्त कोल बा कोयला एंड ऑयल इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स हैज लोअर्ड पोल्यूशन इन मेनी सिटीज. अनेक सहर रे वायु प्रदूषण ह्रास पाइछि. कौन हवा द्वारा ना आमर बर्निंग लो सल्फर कोल जालिबा द्वारा एवं तेल एवं लो सल्फर कोल फैक्ट्री गुड़िक इंधन रूपे व्यवहार करने द्वारा जहाँ गोटे खुशीर कथा जे अनेक सहर रे वायु प्रदूषण जो रेट्रे थिला से अनुसार ह्रास पाइछि. To meet standards, automobile engines have been redesigned and new cars have been equipped. एवं वायु प्रदूषण मात्रा नियंत्रण पाई मोटर जान गुड़िकर इंजिन को रीडिजाइन बा पुनः प्रस्तुत करा जाइछि. ए नुआ कार गुड़िकर कैटालिटिक कन्वर्टर संजोग करा जाउछि जहाँकि प्रदूषक गुड़ी को अक्षतिकारक पदार्थ रे अक्षतिकारक पदार्थ रे परिणत करे एवं एही यंत्रांश गुड़िक जोगु कार गुड़िक द्वारा हेउथुबा वायु प्रदूषण मध्य ह्रास पाइछि. तो पिले एटा तो पढ़ीदेली. एवं शुण कथाटी एठी जो रखिला कैटालिटिक कन्वर्टर ताले जो नुआ कार सब डिजाइन करा जाउची सेतिर कोन करा होची ना कैटालिटिक कन्वर्टर. आमे एठी गोटे कथा देखिले ना जे कलेक्शन मेजर्स थिला. So before the polluted air get released to the atmosphere, we need to trap the pollutants from it. तेणु कौन करागला जो कार गुड़ा करे ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करागला. कैटालिटिक कन्वर्टर कौन करे पोल्यूटेंट गुड़ा को हार्मलेस सब्सटेंस रे परिणत करि दिए. तेणु कैटालिस्ट CATALYST कैटालिस्ट होची एमिति गोटे पदार्थ जी कि रासायनिक प्रक्रिया को त्वरान्वित करे, अल्टर करे, प्रभावित करे किंतु निजे अपरिवर्तित रही. कहि दउची substance that speeds up a chemical reaction while remaining unchanged in itself. कैटालिस्ट होची सही पदार्थ गुड़ाक जी कि रासायनिक प्रक्रिया रे भाग निये सत्य रासायनिक प्रक्रिया को त्वरान्वित करने बा स्पीड अप करने किंतु निजे परिवर्तन हुए नहीं. तेणु कैटालिस्ट रु हेची कैटालिटिक कन्वर्टर. तो ये सब होची गोटे पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस. नुआ कार एबे जो आसुची को 50 वर्ष तलर कार नुह नुआ कार जो सब आसुची तेणु नुआ कार गुड़ी करे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करा जाउची. सो दिस कैटालिटिक कन्वर्टर it's a result of collection measures. So it is not easy to bring about the new developments needed to control air pollution. Many people, physicians, engineers, meteorologists, botanists and others are involved in research seeking new ways.
vast sums of money will have to be spent in the future to clean the air and keep it clean. Often, pollution control means higher prices to cover the cost of control devices in emission systems of new cars. For example, but to most people, the cost is justified. Perhaps the day will come when people everywhere can breathe pure air in cities where the sunlight is no longer blocked by an umbrella of pollution. You know, like during the rainy season we use umbrellas. So like it is blocked, no longer blocked by the umbrella of pollution. So the rainwater cannot touch us, you know, if we use the umbrella. Likewise, the pollutants or the air pollution has made such a chamber or such a coating of pollution, a thick coating of pollution, so that it blocks the sunlight also. So we hope that in near future we should do some arrangement, we should take some initiative like the highly industrialized countries, so that the sunlight is no longer blocked by the umbrella of pollution, umbrella pollution. So now this pollutive environment has become an obstacle between the living animal and the sunlight. So we need to throw out this umbrella of pollution. तो वर्तमान यार कौन रही देख जे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने आवश्यक होउथुबा नूतन पद्धति को कार्यकारी करने एते सहज नुहे। फिजिशियंस शरीर तत्वविद माने बा डॉक्टर माने, इंजीनियर माने एवं मेट्रोलॉजिस्ट होची अ पर्सन हु स्टडी वेदर कंडीशंस, जो माने पाणीपाग विज्ञानी, डाक्तर माने, इंजीनियर माने, पाणीपाग विज्ञानी माने समस्ते एथिपाई बॉटनिस्ट उद्भिद विज्ञानी माने मध्य एथिपाई समस्ते विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा रे व्यस्त अछंती एवं सीकिंग खोजुछंती नुआ तरीका एयर पोल्यूशन को रोकिबा पाई। तेणु वायु को परिष्कार करिबा एवं एहाकू परिष्कार रखिबा पाई मध्य भविष्य रे प्रचुर परिमाण रे दिस इज भास्ट सम्स ऑफ मनी, प्रचुर परिमाण रो अर्थ एथिपाई खर्च करने को पड़ो, विल बी स्पेंट। नूतन कार गुड़िकर निर्गत जो विषाक्त बाष्प बाहरुची से धुआं को नियंत्रण करने जमी आम देखिले आमको कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करने को पड़ो एवं ये कैटालिटिक कन्वर्टर गुड़ाकर खर्च मध्य बहु परिमाण रे रहिबो, अधिक निहाती भाव में रहिबो। ओके, तेणु यहाँ गोटे प्रकार कौन होची, तेणु जितेबाला यही अधिक परिमाणर अर्थ आमको खर्च करने को पड़ो नुआ कार गुड़िक किणापी तथा तार जंत्रांश वायु प्रदूषण को रोकने जो जंत्रांश व्यवहार करने को पड़ुची। तेणु यही मात्रा गोटे आर्थिक पनिशमेंट स्वरूप वायु प्रदूषण किछि मात्रा रे रोका जाई पारिबो, कारण नुआ कार रे ए सब नुआ इक्विपमेंट पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट गुड़ाक आसे। तेणु अधिकांश लोकों को एभली खर्च मध्य नॉर्मल, से माने भाबंती यस दिस इज जस्टिफाइड। तेणु बोध हुए दिन आसीबो जेतेबेले लोक माने सहरर प्रत्येक स्थान रे कैन ब्रीथ प्योर एयर इन सिटीज। सो परहैप्स द डे विल कम, बोध हुए से दिन हुए तो आगु को आसीबो। वी आर लिविंग इन अ सच polluted environment, eating contaminated food, then polluted food, water, everything. So the day might come, not may come, and the possibility is very less. So the day might come when we will get everywhere can breathe pure air in cities where the sunlight is no longer blocked by an umbrella of pollution. तेणु बोध हुए भली दिन आसीबो जेतेबेले लोक माने सहरर नगरर प्रत्येक स्थान रे आमे शुद्ध वायु पाई परिबा, जो वायु को निश्वास प्रश्वास रे नहीं आमे शुद्ध वायु को देह भीतर को नहीं परिबा, स्वच्छ वायु को नहीं परिबा, जोटा कि अनपोल्यूटेड एयर। एवं जहा द्वारा कि ये जो प्रदूषण गोटे आस्तरण वर्तमान जमई देछि सूर्य किरण आम भितर, तेणु यही जो अम्ब्रेला ऑफ पोल्यूशन टी हटि जीवो। सो नो लॉन्गर द सनलाइट इज नो लॉन्गर ब्लॉक्ड बाय द अम्ब्रेला ऑफ पोल्यूशन। सो द लेयर ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम सो थिक,
So we need to reduce it and we need to make our environment clean. For that, air pollution is the biggest pollution that makes the environment polluted. Okay, as the dialogue starts like one can live without food for a few days, without water also for a few days, but one cannot live without the air for a minute also. So we hope the day will come when people everywhere can breathe pure air in cities where the sunlight is no longer blocked by an umbrella of pollution. तो पिले ये जो नोट्स आ ग्लोसरी पार्ट रे किछि किछि वर्ड्स अछि आ मु सब बेले कुहे जो वर्ड्स रो माने तमे जानिबा को चाहुचो बा बही रे देई नाही से गुडी को सब बेले गोटे भलो डिक्शनरी गोटे सब बेले फॉलो करिवो. तो जमती कि इंडस्ट्रियल यूनियन कार्बाइड नेम ऑफ एन इंडस्ट्री इन भोपाल, crippling victim intake, that is the food intake or consumption, manifold as I told that of different kinds, many and various, contaminated means impure, argon it's a chemically inactive gas, severity or the seriousness bhayankarata boli mu kahithili, spew means throw out, obnoxious means unpleasant, then exhaust the gas or steam out of the engine of a car etc. Plying on the road means running. Menace, that is a threat, a great threat is called as menace. Then smelters or furnaces, porous having small holes, kothare thai amaro coke re. Then chlorofluorocarbons, chemical used for cooling in refrigerators. Precipitation, fall of rain or snow, jo borshon hochi. Latches away means washes away. Lesions means wounds or injuries. Smog, as I told, smog, this is what smoke plus fog. Then ingredient, upadana, things used to make something. Dispersal measures, ways of scattering things, dispersal, or to send it in a different direction. Then trap means retain. Smoke tracks, tall chimneys that carry smoke away from factories. Legislation, a body of laws. Meteorologist, right now I told, a person who study weather conditions. Panipagabit, emission system, a system of sending out smoke. So ये थिला तुमरो पिले text part of the chapter air pollution or hidden menace. So hi students, so in this class, in the previous class we studied and discussed the topic air pollution or hidden menace. And so today in this class we shall be discussing the rest part of the air pollution chapter, like the question answer pattern. So let's understand the text, the D part. तो यही पार्ट को प्रथम देखिबा. So what accident took place at Bhopal in 1984? So single line answers you may find out from your book. So at Bhopal on 3 December 1984, one of the most tragic industrial accidents took place. Why is it called an industrial accident? It is called an industrial accident because the tragedy occurred due to release of a deadly gas from a chemical plant operated by Union Carbide. So this part is optional, writing operated by Union Carbide. Then what were the tragic consequences of it? So the tragic consequences of it were that over 4,000 local residents were killed and a large sections of the city's surviving population were rendered blind and crippled ba akarmanya hoy jaithile. The fourth one, how is air important for man? A man can live without food for a month, without water for 2 to 3 days, but he cannot live without breathing even for a minute. This much importance, air has for a person. Then 5. What is the major source of contamination of human body? So the major source of contamination of human body is the quantum of pollutants that enter our body through respiration, because
In comparison to water and food, we take multiple number of times air, or 15 kg of air a man daily exchanges. Then the sixth bit, what is the composition of air? So air is composed of 78% nitrogen, 21% of oxygen and a little less than 1%. Pile directly sabu gudaka bohire rakha hechi tam pai paribo, and less than 1% argon together with 0.03% carbon dioxide. Seventh, when is air is said to be polluted? Air is said to be polluted if the composition of the dry air is changed, that is oxygen level when gets reduced. Bit 8, what fuels do the industries use? So the industries use various fuels such as coal, coke, furnace oil, etc. Then the bit 9, how does the released smoke affect man? So the released smoke affect our lungs slowly and they become the garbage dumps for the pollutants like poisonous gases or obnoxious gases, ash and dust particles. So these are the one line answers directly you can get from the appropriate paragraph of your chapter. Then bit 10, why do thermal power stations cause more pollution? Okay, so thermal power stations cause more pollution as they discharge high amount of smoke and ash. What are the other industries equally harmful for us? So the other industries which are equally harmful to us are cement, steel and ore processing industries. The 12th one is, why are the automobiles increasing on the road? जानवाहन संख्या दिन को दिन कहीं वृद्धि पाइबाकू लगुच? भारी सहज उत्तर, सबु समस्यार गोटे कारण, that is the exploding population. So to meet the demands of exploding or ever increasing population, the automobiles are increasing or they are plying on the roads. How do automobiles contribute to air pollution? The automobiles contribute to air pollution as a release maximum carbon monoxide. This is the poisonous substance into the atmosphere, and automobiles contribute to 60% of air pollution. This is a very general knowledge. So automobiles contribute to 60% of air pollution in various parts of the world. This is not only the problem of India. What are the effects of air pollution on vegetable crops and trees? So air pollution in the form of car exhaust gases contribute to killing of trees and vegetable crops. One line answers. How are buildings affected by the polluted air? Polluted air द्वारा building गुड़ी को केमिति प्रभावित होउछंती ना? by polluting air the fine buildings becomes shabby, old and worn out. Their walls get blackened with soot that has settled on them. Even building surface may actually deteriorate. Then the 16th one, what health problems are caused by polluted air? Okay, so polluted air द्वारा आमर कौन कौन health problem गुड़ाक आमर arise करुची. So air pollution causes eye irritations, आखिरे जंत्रणा हेबा, because the tissues of eye are quite sensitive. Then scratchy throats and respiratory disorders or illness. Then the 7th bit, how is air pollution responsible for increasing the temperature? So air pollutions in the form of carbon dioxide, methane and nitrous oxide in our atmosphere is responsible for increasing the temperature as the gases tend to trap or absorb the radiation from the sun. Then the 18th bit, what harm can refrigerant do?
So chlorofluorocarbons used as a refrigerant, it can destroy the atmospheric layer which protects us from harmful kinds of solar energy. A chlorofluorocarbon, it is used as a refrigerant which can destroy the atmospheric layer. Then the ninth bit, what is acid rain? Acid rain is a kind of precipitation, borsa heba, that contains oxides of sulfur and nitrogen along with other chemicals. Then the 20th bit, how is water affected by acid rain? So acid rain causes damage in lakes and rivers and poisons the plants and animals that live in the water and also drinking water. So no doubt acid rain also damages the drinking water. It decreases the quality of drinking water. Then the 21th, what is the impact of acid rain on soil? I'm पढ़ीथिले माटी ऊपर तार पोषक तत्व गुड़ाक से धोई दिए. So the acid rain changes the soil's nutrient content. पोषक तत्वर मात्रा को acid rain ह्रास करे. So acid rain changes the soil's nutrient content. It washes away nutrients like potassium, calcium and magnesium from the upper layer. Also acid rain kills large stretches of forest. विस्तृत जंगल को मध्य से कंकाल स्वरूप से छाड़ी दिए. तो ये कथाटा को एक्जाक्टली बही फ्रेज यूज करके हमें लिखिबा. सो एसिड रेन किल्स लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फॉरेस्ट लिविंग बिहाइंड लीफलेस skeletons of trees. Then the 22 bit, what are the ways to control air pollution? The ways of controlling air pollution are making law, setting standards and norms, then designing of new cars with catalytic converter. In the last class I discussed what is the catalyst. So designing of new cars with catalytic converter, burning of low sulfur coal and oil in the factories and power plants, etc. Then the 23, how have different countries tried to check it? याको नियंत्रण करिबा पई अन्य देश माने विभिन्न देश माने कोन पदक्षेप नैछंती. So different countries have tried to check air pollution by making laws, setting standards and norms to check air pollution, and also by conducting air quality programs. Then 24th, how have the air quality programs brought us benefits? The air quality program गुड़ाक आमको केमिति benefit आनिचंती. So the air quality programs had brought us benefits by turning pollutants into harmless substances with the use of newly designed catalytic converters. Then, or you could write, the air quality programs have brought improvements in many areas. For example, burning low sulfur coal and oil in factories and power plants has lowered pollution, and nowadays or these days the new cars have been equipped have been equipped with catalytic converters which changes pollutants into harmless substances. This is one of the collective measures. Then the 25th, why do we still need to find out better ways to control air pollution? तथापि air pollution को control करिबा पई आहुरी उन्नततर पद्धति खोजिबा दरकार. The physicians, the engineers, the botanists, everyone are searching for the better ways of checking air pollution. So we still need to find out better ways to control air pollution, because to meet the demands of exploding population, any kind of population is directly, it's directly proportional to the population. So to meet the demands of exploding population, and there are many factors contribute to the air getting polluted. There are many factors, and some of the factors are beyond our scope or beyond our control. That's why we need to search for the better ways. Like we discussed, on a broad manner, there are three measures of controlling the air. So that's why to meet the demands of exploding population, and there are many factors
contribute to the air getting polluted. Okay. So, let's go beyond the text. There are 5 questions. Okay. So, text bahar ku tike jai kiri au tike chinta kariba, like what are the real reasons. So why does the oxygen level in the atmosphere get reduced? Okay, so now this is the E section. The E section, the E part. Why does the oxygen level in the atmosphere get reduced and what could be its consequences? So the oxygen level in the atmosphere get reduced if the composition of various gases in the dry air is altered. And what could be its consequences? So its consequences could be that the air is polluted and inhale of this polluted air can lead to respiratory disorders. So inhalation of a polluted air can lead to respiratory disorders. So this question is being repeated. So how do the chemical industries cause dangerous air pollution and what is the far reaching consequences? Ebong yahar sarbochcho parinamo kon hei pare. So thermal power stations discharge high amounts of smoke and ash. Industries such as cement, steel and ore processing release toxic fumes, okay, into the air. Then the third bit. So how is acid rain caused? So acid rain ba amla brushti kahiki hue? Now burning of fossil fuels to generate electricity, vehicle exhausts, manufacturing, oil refineries and other industries are the major sources of oxides of sulfur and nitrogen. Pile kotha taku bujho. Chintar karan houchi oxides of sulfurs and nitrogen. So different kind of oxide bi achi. And these substances mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain. Then the fourth bit. How does polluted air travel from one country to another? So polluted air get carried by the wind from one country to another. Pavan dwara bahito hue. Often for distances of thousands of miles. Hazar mile porjonto ei pradushito vayu poribahito hoithae. Then the fifth bit. What steps can be taken to reduce the pollution by automobiles? Is air pollution a global problem? So to reduce the pollution caused by the automobiles, new cars can be designed with devices such as catalytic converters. This is also for the second time we are studying. Catalytic converters. So new cars have been equipped with the catalytic converters which changes pollutants into harmless substances. So we shouldn't give a single chance for the pollutants to mingle with the atmospheric air. And if it says, is air pollution a global problem? Yes, because polluted air travels from one country to other country, thousands of miles. It can travel thousands of miles. So that's why it's a global problem. Pile third bit dekho, page number 83. Given below is a table. Read the text and complete the table. Okay. So let's see this one. Dekho. So air pollution. One is caused by. This is one column. Then impact on. So what you need to do, just you need to find out these 3 points from the paragraph. You will get what is the factor, it is caused by, then impact on and nature of damage and nature of damage. Okay, so let's see. First hela industries. So industries kon karanti this impact on air. Okay, and lungs diseases amku fuspus janita roga hei pare, lung diseases.
Then, thermal power station. Thermal power stations, and its impact is also again on air because they release maximum amount of ash and dust particle to the air. So smoke and ash in air, smoke and ash in air. Then automobiles, janabahano. So what is its impact? Its impact is on atmosphere. Okay, so they release maximum carbon monoxide into the atmosphere. They release maximum carbon monoxide into the atmosphere. Then acid rain. So acid rain never spares anything it falls on. Acid rain ba amla brushti jaha upare bi huye se taku damage kare. So acid rain, so its impact on soil. What is that? It leaches away soil's nutrients. It leaches away it leaches away soil's nutrients. Okay, and the last one, chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons and its impact on atmosphere. What is that? Destroying atmosphere layers. Destroying atmosphere layers. Okay, so simply we summarized the type of nature of damage, impact on and caused by these are the factors like industries, thermal power stations, automobile, acid rain and chlorofluorocarbon. तापर पे देखिबा F block. So let's think together. The text you have read mentions some steps to reduce air pollution. Now work in groups to suggest more steps for dealing with the problem. You can refer to newspapers, journals and discuss among yourselves to get more ideas. The teacher divides the class into 4 or 5 groups for the purpose. ओके तेणु चारि रु 5टी ग्रुप रे डिवाइड हेकरी तमे कोन करि परिबो न्यूज पेपर पढो बा तमरो बुक इटसेल्फ बुक रे तमरो जेतिकी आइडियाज देछि जे कोन कोन करा जाई परिबो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करिबा पाई. सो दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग वर्क. छोटो छोटो स्टेप्स गुडा को लेखिबा को पड़िबो. एटा को बेसी भी इंटरप्रेट करिबा दरकार नाही. सो दिस इज अप टू यू. तापर देखो कहा गला सेकेंड पार्ट रे लेट्स स्पीक एंड लिसन. ईच ग्रुप प्रेजेंट्स इट्स आइडियाज इन द क्लास रिगार्डिंग द स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. Other groups listen and react to the ideas. So if it is its possibility by its pros and cons गोटे कहा गला एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करा पे एया करिबा दरकार. सेटा केते दूर संभव its possibility and its profitability केते से गोटे जिंस प्रॉफिटेबल हे परिबो कि नाही if we take some action or some measure to control air pollution. After all the groups have presented ideas, commonly agreed aspects should be finalized and the teacher acts as a observer and coordinator. So you must enjoy this activity in the classroom. Then bit 3, let's write. So write a letter to the editor of a newspaper or the ministerial department of environment explaining the importance of clean air and suggesting ways to keep it clean and pure. Okay, तो पहले गोटे न्यूज़पेपर थ्रू रे आमे द मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को कौन लिखिबा एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एयर बा शुद्ध बा परिष्कार वायुर अप्रदूषित वायुर महत्व कौन आउ सजेस्टिंग वेज टू कीप इट क्लीन एंड प्योर. तेणु मिनिस्टर ऑफ
द मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट तांको पाखु आमे गोटे न्यूज़ पेपर थ्रू रे गोटे लेटर जदि लिखिबा केमिति लिखिबा सो ए फॉर्मेट टी को कहूची बट ट्राई टू बी कंस्ट्रक्टिव बड़ बड़ साहित्यिक बा लिटरेचर रे काम तुमको दिया जाऊ नाही बिकॉज यू आर एट द 10th लेवल किंतु यूज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिंपल वर्ड्स यूज कर पछे बट टेक द इनिशिएशन निजे लिखिबा पाई सब चेष्टा कर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज योर्स जस्ट खाली पैटर्न को देखिकी ओके सो टीचर शुडंट बी द हैंड फॉर द स्टूडेंट्स द टीचर ओनली कैन गिव यू द आइडियाज द पैटर्न और द मेथड ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल ओके सी तो एडिटर बा जड़े न्यूज़ पेपर संपादकों निकट को आम गोटे पत्र लिखा एवं संपृक्त डिपार्टमेंट परिवेश डिपार्टमेंट मिनिस्टर दृष्टि आकर्षण करने चाहिए एयर रो महत्व क्लीन एयर रो महत्व केते आकू आम अंचल रे आम जिले में आम राज्य रे वायु को परिष्कार रखिबा पई बा अप्रदूषित रखिबा पई कौन कौन स्टेप्स निया जाई पारिबो से बाबत रे तांको जणैबा तेणु पैटर्न टी को देख एंड यू शुड रिमेंबर दिस ओके सो you could write like this the editor any popular newspaper the Times of India let it be the Times of India Bhubaneswar and here your address suppose any address your address suppose lane 4 Malik complex this is up to you this address is yours Bhubaneswar Jagamura Bhubaneswar and here is the date so what is the subject okay so here the editor's address here your address the subject is suggestions to keep air clean and pure then sir we address someone saying sir or madam so we can't say that the editor is a male or female so sir or madam we need to write both so then you just write sir with due respect I would like to draw the attention okay मु गोटे लाइन पे कही दूची the attention of the honorable minister Department of Environment towards the alarming air pollution of our state or of our state and ओके देख पे मुझे बर्तमान कहूँ तो आम सब्जेक्ट रू देख केमी स्टार्ट करवा ओके सो नेवर कॉपी एनी वन कहार लेखा को केबे भी कॉपी करवा उचित नुहे द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज योर्स सो व्हाई डोंट यू डेयर टू राइट योर ओन तेणु आम कौन लिखा जे सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू draw the attention of the honorable minister department of environment towards the alarming होची irritating or this is what disturbing वर्तमान वायु प्रदूषण हमको चिड़े सारानी वायु प्रदूषण जो आम बहुत असुविधार सम्मुखीन हेलानी भारी व्यतिव्यस्त हो पड़े ड्यू by taking the polluted air the alarming air pollutions of the state okay
and as a matter of a public health, okay, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଉଠୁଛି, and as a matter of public health, here I suggest few ideas to control air pollution or to check air pollution so that we may inhale clean and pure air. So what are the ideas that we should work on? Like use public transport. So sir, by using एटी कौन करिबा जो कहि किछि आइडियाज बा सजेशंस दियो ताकू पिले पॉइंट आउट करके लिखिबो, ताकू नंबरिंग करके एठी लिखिबा कोन हमर एठी हमें आइडियाज कोन दबा सेही आइडिया गुडा को निज भाषा रे लिखिबार अछि. यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके. So or we should have a strict control on private transports. व्यक्तिगत गाड़ी गुड़ाक जते कम व्यवहार करिबा. So first one देखो नंबरिंग करी कहूची यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन व्हीकल शेयरिंग. आमे व्हीकल जदि शेयर करि परिबा जते जानवाहन रास्ता को आसीबे सेते प्रदूषण हबो. So first one use public transport, second one vehicle sharing, the third one plantations and setting up new parks. You know, the Chennai government, then in other cities, they are planning to setting up a lot of parks. तेणु थर्ड बिट कौन को आम वृक्षरोपण करवा, प्लांटेशंस एंड सेटिंग अप न्यू पार्क्स. Wherever there are industries or factories or manufacturing units, there should be some parks, so that if we set up new parks, so no doubt, you know, the polluted air can be reduced. Why? Because, you know, the natural oxygen can be obtained from the trees. तेणु थर्ड बिट है प्लांटेशंस एंड सेटिंग अप न्यू पार्क्स. आम रिक्वेस्ट करि परिबा जे आम अंचल रे कंसर्न मिनिस्टर को जे आम अंचल रे नुआ पार्क सब गठन करा जाऊ. देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स केमिति अधिक मात्रा रे व्यवहार करा जाई पारिबो, यू नो, रिप्लेसिंग दिस vehicles, the traditional vehicles, we should depend on electric vehicles. Then and एटी पिले गोटे एटी कथा भी गोटे कह जाई परिबो. तमे जानिथिबो दिल्ली रे ऑड आउ इवन स्कीम मध्य किछि दिन पे चली थिला. सो द सिलेक्शन ऑफ, you know, this idea is up to the government. सरकार चाहिए ये किसी पदक्षेप नहीं पारे, आम क्या फोर्स करि परिबा नहीं, आम आइडियाज देबा. सो ऑड एंड इवन स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जोटा कि ऑलरेडी हेइथिला, और वी शुड सर्च फॉर एनी प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल. असंभव जुक्ति गुड़ाक कले पिले हम ना. सो वी शुड सर्च फॉर सम प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव, वास्तवधर्मी आउ प्रभावशाली, some practical. So this is the fifth bit. Practical and effective means of pollution control. Then awareness programs in schools, colleges, universities, etc. This is my sixth bit. How to control air pollution, because students are the future of India or future of any nation. So awareness programs in schools, colleges should happen. Plantation, then setting up new parks. Okay, then many things we can do also. Then the industries and factories are there, so we should set up new guidelines for air pollution. So the guidelines of air pollution should be strictly obeyed, and the industries, companies or factories, those are violating the guidelines, strict punishment should be given to them. जो माने भी ये जो सरकार गाइडलाइन को भांगुंट वायु प्रदूषण करने गोटे मात्रा अच्छी. नो दिस अमाउंट ऑफ ऑब्नॉक्सियस गैसेस मैक्सिमम दिस एक्स इंडस्ट्री कैन रिलीज टू एटमॉस्फेयर. सो द गाइडलाइंस फॉर एयर पोल्यूशन शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड. punishment, you know, in terms of like economical or financial punishment also should be given to the factories or industries. Those are violating the guidelines of air pollution. Then setting advanced technologies. पिले जो आमे देखी थिले जे preventive measures, dispersal measures and collection measures. So these three measures also should be strictly implemented. Just like this catalytic converter we are going to use in the coming future in the advanced or the new cars.
सो ये जिन गुड़ाक बर्तमान एतेटा संभव हो पारुनी से टेक्नोलोजी साहाय्य नबाक पड़ो यहाँ ओडिया रे कहीदेली लिखा केमिति ना सेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और यूटिलाइजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्पर्सल मेजर्स एंड कलेक्शन मेजर्स देन रेगुलर क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स किसी व्हीकल भी अच्छी माने आमर जोड़ा कहते रोड स्वीपर बोली कहते रास्ता मध्य सफा करे द डस्ट पार्टिकल्स शुड बी वाइप्ड ऑफ from the public roads. So these are the few suggestions that we can give to check air pollution. And finally we can write, sir, I hope the authorities or the concerned persons will take care of it and they will feel the seriousness of the matter, that is air is getting polluted and it's a matter of public health. So I hope the best action from the government. एतिकी लिखिकी आमे ए लेटर राइटिंग को सारी परिबा. सो एई सब पैटर्न गुडा को तुमको एथि शिखा होउची जे एसर राइटिंग हैला लेटर राइटिंग रहिला एगुडा को केमिति लिखिबा योर ओन आइडियाज words should be very humble and simple. अति उच्च कोटीर शब्द लेटर राइटिंग रे व्यवहार करबा दरकार नाही किंतु तार गोटे तरीका गोटे पैटर्न अछि सेहीटा को सबले फॉलो करबा उचित. देन फोर्थ बीट लेट्स डिबेट. Some speak for the motion and some against. The teacher acts as the chairperson. पिले एटा अगेन गोटे डिबेट अछि एटा मध्य it should be done in the class. एक गोटे कथार फॉर रे किछि कहिबे किछि विरुद्ध रे कहिबे like use of private vehicles should be banned to control air pollution. As I told that we should rely most on the public transports. Industries being the major source of pollutions needed to be disestablished. Okay, तो यार फॉर रे आउ अगेंस्ट रे तुम एटा क्लासरूम रे डिबेट करिवो. Okay, so now let's see the G section. देखो G section में कौन रहिला let's enrich our vocabulary. आमर vocabulary बा शब्द शक्ति को आउ टिके केमिति समृद्ध करिबा. There are some words or phrases in the text used to convey the harmful effects of air pollution on mankind. A few examples are given. नहीं किसी शब्द व्यवहार करा जाइछि एयर पोल्यूशन रो मारात्मकता को दर्शाइबा पई. सो नो डाउट दीज आर द लाइक नेगेटिव वर्ड्स लाइक इरिटेटिंग. एटा गोटे कोन चिड़ेइबा बा जन को विरक्ति प्रकाश करैबा एटा सब नेगेटिव वर्ड्स. तो एई भली जो वर्ड गुडा का हमर देइछि पिलेठी तो एई वर्ड गुडा को आमे आउ केतेटा वर्ड आमे लेखिबा. सो व्हाट आर दोज वर्ड्स बही तमे सर्च कले मध्य पाई जिवो लाइक emission, harmful, respiratory illness, exhaust, then lesions, smoke, scratchy throat, global warming, obnoxious, contaminated, severity, then menace, toxic. तो यही वर्ड गुड़ाक जोड़ा कहली यही वर्ड गुड़ाक शो करुच्ची द सीरियसनेस ऑफ एयर पोल्यूशन. देन the second bit, the word respiration is a noun from the verb respire. Now with the help of a dictionary find the verb or noun in the following form. तो बहुत समय पे कौन करा हुए verb रो noun आउ noun रो verb मध्य क्रिएट करा जाए. तो हमें देखिबा देखो एटी अछि noun एटी अछि verb कौन देला resident resident. ओके बासिंदा भर्ब कौन हम ओडिया रे थरे चिंता कर बास करिबा सो रिसाइड. लाइकवाइज पोल्यूशन pollute भर्ब हैला pollute करिबा बा विषाक्त करिबा बा प्रदूषित करिबा. composition then composite then inhalation inhale
You know, these are the verbs. So simply we are producing, we are not the producer. Simply we are finding out the verbs from the corresponding nouns. Likewise, you know, ठीक है, कही दूँ देखो, inhalation verb is inhale, emission emit, comparison compare, then knowledge know, recovery recover, destruction destroy, contamination contaminate, then precipitation precipitate, then deterioration then deteriorate. ओके, तो युवाक कौन थिला पिले आम नाउन रु भर्ब बाहर कले, एबे भर्ब रु नाउन बाहर करिबा। देख नाउ भर्ब रु आम नाउन बाहर करिबा, लाइक कंज्यूम। सो भर्ब है नाउन है कौन, कंजप्शन। ओके, absorb करिबा बा ग्रहण करिबा, कंज्यूम करिबा, लाइक अल्टर अल्टरेशन। ओके, बिलीव बिलीव विश्वास करिबा, दिस इज VE, दिस इज बिलीव, माय बिलीव एटाला विश्वास। ठीक समिति रिड्यूस रिडक्शन, प्रोड्यूस देन प्रोडक्शन, operate operation, expect expectation, represent representation, radiate radiation, illustrate illustration, justify justification, prevent prevent true hejibo kono prevention, prevent is a verb and noun will be prevention. तापर देख पे कही अरेंज द वर्ड्स प्रोवाइडेड अंडर नाउन एंड वर्ब इन ऑर्डर व्हिच दे शुड कम इन अ डिक्शनरी। एटा बहुत गोटे छोटिया एक्टिविटी, अल्फाबेटिकली फ्रॉम A to Z डिक्शनरी रे आमे वर्ड को सजै के लिखा होई थाए, तेणु ताकू तमे एटा भली लिखिबो। नाउ रीड द फॉलोइंग बिलो। ओके, बेले बेले मुझे कही ना सर्टन वर्ड्स आर देयर, दोज वर्ड्स आर फॉर्म्ड, जमी ओडिया रे संधि थाए ठीक सेमिति सर्टन इंग्लिश रे मध्य सर्टन वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएट और फ्रॉम रिलेटिंग टू वर्ड्स। ओके, पाखापाखी अर्थ थिबा दुईटा शब्द को नहीं। ओके, मु कहूची देख जानि परिबो, लाइक वन इज फॉरेन प्लस एक्सचेंज बैंक, सो दिस इज कॉल्ड फॉरेक्स बैंक। ओके, ये जो फॉरेन आउ एक्सचेंज, ओके अदल बदल प्रथा मिसले कौन है फॉरेक्स। लाइकवाइज एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ओके रप्तानी इंपोर्ट है आमदानी पॉलिसी, ये जो नीति आमदानी रप्तानी पॉलिसी या कहगला एक्जिम पॉलिसी। सो दिस वर्ड एक्जिम, you know, it has been constructed from the two words export and import. Then slim plus tender, slim hela patala, tender hochi juba boyso, slim plus tender, so this becomes slender. Then the fourth one telecast is na, so this is television ba दूरदर्शन, television we say TV plus broadcast hochi sancharana, broadcast, so this is telecast. Okay, so you know, this is a quite interesting activity. So you may find out there are n number of words, those have been designed or those have been constructed from two related words. देखो export import, isn't it? Aren't they related words? So these are related word ru ए भली भावरे किछि words produce करा जाए। Then the fourth one, given below are some expressions, use a single word for each expression, go to the text and find the word. अच्छा देखा पिले बे, a great threat, गोटे बहुत बड़ा विपद, menace, getting worse day by day, दिनों को दिन गोटे परिस्थिति खराब होबा, so deteriorate
rate. Things used to make something, ingredients, upadano. Gote konosi rosei kola belu ko ame we say what are the ingredients to make chicken curry, like that. So ingredients. A body of laws. This is strictly, given in your book. Legislation. Directly this is given in your book. Legislation. One who studies weather conditions. पाणीपाग विषय जो माने अनुध्यान करती से माने कौन कहती एटा हला मेट्रोलॉजिस्ट. मेट्रोलॉजिस्ट. ओके एक पदरे एगुड़ा को प्रकाश करा जाए. तापर देखो 8th सेक्शन ने कौन कहला पहले. Let's learn more language. Irritating gases enter the atmosphere. बिरक्ति करो. Present participle यूज होइछि. Every day, every moment we breathe polluted air. एटा past participle यूज होइछि. We breathe polluted air to become a victim of air pollution. तेणु the words underlined above are known as participle adjectives ना. केमिति एक तो हला पार्टिसिपल एडजेक्टिव हिसाब रे यूज करा हेछि. इरिटेटिंग गैसेस. गैस हला नाउन. द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव. गोटे वस्तु बा जिनिसटा केमितिया जो शब्द जणाए सेटा हला एडजेक्टिव. किंतु गोटे वस्तु बा व्यक्तिर काम केमितिया सेटा को जणाए एडवर्ब. हाउ इज द वर्ब, that is known by adverb. But how is the person or thing itself, this is known by adjective. सो प्रेजेंट आउ कौन कौन सेमती देख वर्ड्स अच्छी कही दूची. लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल रे थाइकरी एडजेक्टिव हिसाब रे व्यवहार होइतिबा वर्ड्स कौन कौन अच्छी. लाइक एक्सपांडिंग, डैमेजिंग, ग्रोइंग, एक्सप्लोडिंग. यही चारिटा. पास्ट पार्टिसिपल रे कौन अच्छी सेमती इंडस्ट्रियलाइज्ड, लोयर्ड, पोल्यूटेड, कंटामिनेटेड, प्रदूषित. Now complete the following sentences with appropriate participles of the verbs given. Okay. तो पिले ये गोटे कथा मु कहया पे चाहिए. whenever ये जो adjective हिसाब रे व्यवहार करिबा पई सब बेले सेटा past participle रे थिबा जरूरी अटे. केमिति देखो जरूरी अटे. we take polluted air. pollute, polluted, polluted. तेणु एटा पास्ट पार्टिसिपल को सब बेले चली जाए. प्रदूषण, प्रदूषण करिबा, प्रदूषण कला लाइक V1, V2, V3. तेणु जो एडजेक्टिव पाई जेमिति कि चिरा कन्ना. तेणु एटा पास्ट पार्टिसिपल रे ही सब बेले एडजेक्टिव फॉर्म रे आसे. खंड विखंडित घर. खंड विखंड करिबा वर्ब V1. खंड विखंडित. आलोचित, आलोचना, डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड. सो इट कम्स टू V3. सो देखो द बेगर इज वेयरिंग अ टॉर्न शर्ट. ओके. टीयर हैला चिरिबा किंतु चिरी जाई थिबा तेणु पास्ट पार्टिसिपल को चली गला. सो टर्न शर्ट. माय फादर बॉट मी. मो बापा मो पे गोटे किनी देले कोन स्विमिंग सूट. ओके. जहा को पिंदी की पहरा जाए. Swimming suit. My friend wanted a dash instrument. Cleaning instrument. Cleaning instrument. I never like to take a boiled egg. सिझा जाई थिबा. देखो boil, boiled, boiled past participle को चली गला. Boiled egg. Okay. Likewise, air pollution causes breathing problem. Breathing, present participle, breathing problem. Okay, the sixth one, people get diseased in a polluted atmosphere. Polluted atmosphere. Then air pollution has damage रू कौन हम damaging effect. present participle रा को यूज कले. so damaging
effect. Then severity of air pollution. Air pollution ro jo seriousness is more found in dash countries. Okay, you could write here developed or developing countries. So let it be developed countries. Developed countries. Okay. Then देखो पहले बी एक्टिविटी देछि पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट सब विराम चिन्ह गुड़ाक से टेक्स्ट रे आमे दबा. सो फुल स्टॉप इज आल्सो काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क. तो देखो को जगह आमे पंक्चुएशन मार्क दबा. इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट दबा पंक्चुएशन मार्क. इन द यूनाइटेड स्टेट रे कौन हुए? इन द यूनाइटेड स्टेट्स पंक्चुएशन कॉमा control of air pollution is chiefly the responsibility of the state and local governments. Then local governments, full stop. Then all the states. So a sentence must get started with the capital letter. So all the states have air quality management programs which are patterned after federal laws. So here is the full stop, federal laws, then the full stop. The basic federal law, so it should be the capital, the basic federal law dealing with air pollution is the Clean Air Act of 1970 amended in 1990. So in it full stop, it a sentence in 1990. Under this law, so this should be capital because the sentence starts with a capital letter. So under this law, here should be a comma. The Federal Environment Protection Agency sets standards किछि मानक निर्धारण करन्ति for air quality. So here should be the full stop. What are the standards? Now the moment someone hears this sentence, what are the standards? So no doubt this is an interrogative sentence. So what are? It should be, again it's a sentence. So what are the standards? With a question mark. तापर देखो पहले last but not the least. Let's prepare a project. You live in a locality, you might have experienced some sort of pollution in your locality. It might be pollution of air, water or soil, or could be even noise pollution also. See, noise pollution is enormous, vividha prakar of many different kinds. So survey your area with a focus on the nature of pollution, its ill effect, cause of pollution and measure to control the same. Analyze and interpret the data or information collected. Write all these in a project format. पिले एटा मध्य तुमको करबा को पड़िबो. तो एथिरे मु कोन बतौची सुनो. आमे गोटे तुम लोकालिटी रे को टाइप रो पोल्यूशन रहउची दैट इज अप टू यू. सेटा को तुमे मार्क करिवो. एटी गोटे कथा देखो पेज नंबर 83 रे आमे गोटे टेबल टे कंस्ट्रक्ट करथिले थिला ना. एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय गोटे कॉलम थिला, इम्पैक्ट ऑन गोटे कॉलम थिला एंड नेचर ऑफ डैमेज गोटे कॉलम थिला. एमिति गोटे तम एरिया रे को प्रकार प्रदूषणटा, वायु प्रदूषण ना जल प्रदूषण ना शब्द प्रदूषण, को प्रकार प्रदूषण होउची ताकू मार्क करिकरी सेथरे प्रॉब्लम कोन रहउची एमिति ताकू टेबल करिकरी लिखिबो. नेचर ऑफ पोल्यूशन, इट्स इल इफेक्ट्स, कॉज ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर टू कंट्रोल द सेम. ताकू कंट्रोल करिया पई जहा सजेशन सिंपल वर्ड रे दिया जाई परिबो. गोटे छोटिया कथाटे कहूची. फॉर एग्जांपल मनकर जनकर एरिया रे प्रॉब्लम रहउची नॉइज पोल्यूशन. सो नेचर ऑफ पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन, इट्स इल इफेक्ट सो नॉइज पोल्यूशन it creates a hearing problem also, because constantly if you are in an environment where noise pollution is going on or high sound, if you hear the high sound, then the membrane inside our ear is very thin, it might get damaged. So that's why then the causes of pollutions,
Causes of pollution, it's noise pollution means mostly this is due to the automobiles or the vehicles, and a measure to control the same. So how this can be controlled? One thing is noise pollution. So a report ta ko likhla bale mon ko likhilo sir, like here we have many educational institutions are there, so humps should be there just well before the humps should be there on roads. And noise pollution, none of the vehicle is allowed to produce high sounds near the educational institutions. So there should be some banner or some notification that this is the school area or this is the hospital area. So here producing high sound is also a criminal offense, and fines also should be collected if anyone violates this rule. तो ए भली भाव रे तम एरिया रे जहा प्रॉब्लम अछि ताको नियंत्रण करिवा पाई, if it is possible the violators also should get punished. कौन दंड दिया जाई परिबा, तो fear should be there, डरटा लोकंग भितरे रहिबा दरकार. Then and then only they will be conscious about it, से बाबद रे लोक माने जागृत हेबे. तो एटा को ए भली भाव रे गोटे टेबल करिकिरी कोन कोन सजेशंस तार जेमति कि रहिला नेचर ऑफ पोल्यूशन, तार खराब बा रुग्ण प्रभाव, causes of pollution and measure to control the same. So it could be an individual or group project. So better if you make it a group project. Suppose some of the students are staying in an area, so if you make it is a group project, so no doubt प्रत्येक कॉलम रे तमे बहुत गुडे सेंटेंसेस लिखि परिबो ए जो नेचर ऑफ पोल्यूशन, इल इफेक्ट, कॉजेस ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर टू कंट्रोल. अगेन आई एम सेइंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, you are allowed to use simple word use करो पछे 4 धाड़ी रु 5 धाड़ी भितरे एटा को लिखिबो. सो किछि बहुत गुडे जते गुडे सब प्रोजेक्ट activity तम ये रे रहूची, try to do it yourself, get the ideas from the teachers. Once you should have the dare to write in your own words. So this was all about the entire chapter, air pollution or hidden menace. So I hope you enjoyed the topic. Moreover, you are alert about the threat of air pollution. Thank you all.